स्टूडेंट्स, मैं सलमान जैदी आपका केमिस्ट्री टीचर। हाउ आर यू? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों की बार बार इसरार पर मैं आज अपना टॉपिक तो खैर नहीं, ये लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ जिसमें तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 9 to 16 क्लास 10th के मौजूद हैं। मुझे बहुत हद तक उम्मीद है कि जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन, पेपर 100% नहीं तो 90% या 80% इसी में से आएगा। तो चले आए स्टार्ट लेते हैं। चैप्टर 1 है हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम। इसके 19 शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला क्वेश्चन है डिफाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दूसरा है व्हाट इज एक्टिव मास, तीसरा व्हाट इज मीन बाय रिवर्सिबल रिएक्शन, राइट डाउन chemical equilibrium state, define law of mass action, write two properties of irreversible reaction, write equilibrium constant for given reaction है H2 plus I2 is equal to 2HI. What is complete reactions, how it is represented, define irreversible reaction, give example. What do you mean by extent of reaction, write down the macroscopic characteristics of forward or reverse reactions, any two, define forward and reverse reaction, define equilibrium constant, define dynamic equilibrium, write two characteristics of reversible reactions, equilibrium constant for given reaction, into N2 plus 3H2 to NH3. What does the large value of Kc shows, what is static equilibrium, if QC is greater than Kc, what is the direction of reaction. उसके बाद 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारे इस चैप्टर के पॉइंट से इंपॉर्टेंट हैं। डिफाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हाउ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रेडिक्टेड, ये एक। डिफाइन लॉ ऑफ मास एक्शन, ड्रॉ इट्स एक्सप्रेशन फॉर जनरल रिएक्शन, और तीसरा हमारे पास है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस ऑफ सॉल्ट्स के एम से जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। राइट टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स। उसके बाद है राइट टू यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, स्टेट आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, डिफाइन एडक्ट, राइट डाउन द uses of bases, why H positive ions acts as a Lewis acid, define pH, what is the pH of pure water, write the names of formulae of two mineral acids, differentiate between conjugate acid and conjugate base, write limitations of Arrhenius concept, write any two physical properties of bases, define neutralization reaction, give example, write two limitations of Arrhenius concept, write two uses of pH, define double salt with an example, write the conjugate acids of CH3COOH and CH3NH2, define water of crystallization with example, what are the limitations of Arrhenius concept, write two uses of aluminium hydroxide, write the name and formula of any two naturally occurring acids, how soluble salts recover from water. लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 5 लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर के। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, ब्रॉन्सन-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, 5 यूजेस ऑफ बेसिस, 5 प्रिपरेशन मेथड ऑफ सॉल्ट्स। चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस में डिस्कस करना शुरू कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट, define carbonization, define alcoholic group with an example, what is difference between alkenes and alkynes, define functional group, what are aromatic compounds, give an example, what is meant by isomerism, what is an ester group, write down the formula of ethyl acetate, write any two uses of organic compounds, write down different types of coals, what is structure formula, give an example, how is carboxylic group tested, define organic compounds with an example, what is coal tar। लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 से हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, डिफाइन कोल, हाउ कोल इज फॉर्म, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल, होमोलोगस सीरीज, define alkyl radicals, describe radicals of propane and butane, find functional group, describe different functional groups, any 3। चैप्टर नंबर 4 है जी हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स का। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। डिफाइन प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन विद एन एग्जांपल, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑयल एंड घी, व्हाई आर alkenes reactive, give two uses of ethene, differentiate between saturated and unsaturated hydrocarbons, what are closed chain hydrocarbons, give an example, give two sources of alkanes, give two physical properties of alkynes, what do you know about hydrogenation of alkenes, write the halogenation of tetrahaloids, why the alkenes are called olefins, what are addition reactions, justify alkanes gives only substitution reaction, why hydrocarbons are soluble in organic solvents, why color of bromine water discharges on addition of ethene in it। चैप्टर नंबर 4 के 5 लॉन्ग क्वेश्चंस जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ alkenes, 5 uses of ethene, uses of acetylene,
halogenation of alkenes and preparation method of alkynes। चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। इसका जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, राइट द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन्स, गिव एग्जांपल, पेप्टाइड लिंकेज वाला क्वेश्चन है ये। राइट द नेम ऑफ टू डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ विटामिन्स, हाउ यू जस्टिफाई आरएनए वर्क्स एज अ मैसेंजर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए, वेयर आर प्रोटीन्स फाउंड, डिस्क्राइब हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, हाउ पेप्टाइड linkage is formed between amino acid of proteins, what are polysaccharides, give an example, what are fat soluble vitamins, give general formula of amino acids, how plants synthesize carbohydrates। चैप्टर नंबर 5 लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं हमारे पास वो 4 हैं। सबसे पहले है राइट अ नोट ऑन डीएनए, राइट डाउन द सोर्सेज एंड डिजीजेस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सम फैट soluble vitamins, इंपॉर्टेंस ऑफ vitamins तीसरा शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, और चौथा है सोर्सेज और यूजेस ऑफ प्रोटीन्स। चैप्टर नंबर 6 है हमारे पास दी एटमॉस्फेयर, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है नेम द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ट्रोपोस्फेयर, राइट 4 नेचुरल सिस्टम्स ऑफ और अर्थ, व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड इज अ ग्रीन हाउस गैस, राइट द कंपोजिशन ऑफ ड्राई एयर, व्हाट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स, गिव एग्जांपल्स, राइट 2 इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लेशन, राइट डाउन द नेम्स ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर रीजन्स, राइट डाउन द इफेक्ट्स ऑफ SO2, राइट द टेम्परेचर रेंज ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर, गिव 2 इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, what define greenhouse effect, how acid rain is produced, right chemical reaction occurring in the mid stratosphere, what is ozone hole। 3 लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 6 द एटमॉस्फेयर से, वो है जनाब नोट ऑन ट्रोपोस्फेयर, ओजोन डिप्लेशन और एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट्स। चैप्टर नंबर 7 है हमारे पास वाटर का, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस है जनाब। मेंशन द डिसएडवांटेजेस ऑफ डिटर्जेंट्स, हाउ वाटरबोर्न डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड, व्हाट इज कैपिलरी एक्शन, व्हाट इज जॉइंटर्स, व्हाट इट्स गिव इट्स सिम्पटम्स, write down 2 properties of water, write 2 disadvantages of hot water, differentiate between soft and hard water, what do you mean by chlorination, which disease are caused by acute cadmium poisoning, how decaying plants consume oxygen, how does limestone dissolve in water, how boiling process remove hardness from water give reaction, how does aluminium harm the fish, डिस्क्राइब केमिस्ट्री ऑफ रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर बाय क्लार्क्स मेथड। चैप्टर नंबर 8 है जी हमारे पास केमिकल इंडस्ट्रीज, उसके शॉर्ट क्वेश्चन है राइट 2 एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वेंट प्रोसेसेस, डिफाइन पेट्रोलियम एंड क्रूड ऑयल, व्हाट इज मीन्स बाय मिनरल्स, हाउ इज अमोनिया प्रिपेयर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ यूरिया, राइट द फार्मूला ऑफ मैट एंड यूरिया, व्हाट इज रोस्टिंग, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, व्हाट इज ग्रेविटी सेपरेशन, गिव रॉ मटेरियल्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ यूरिया, डिफाइन ओर्स, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। जी स्टूडेंट्स 4 लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास इस चैप्टर के। व्हाट इज मीन बाय कंसंट्रेशन, गिव 2 मेथड्स, डिस्क्राइब इन डिटेल सॉल्वेंट प्रोसेस, डिस्क्राइब स्मेल्टिंग, हाउ क्रूड ऑयल इज रिफाइंड, एक्सप्लेन 2 important fractions of petroleum along with their usage।